sample introduction in a lab on chip. There are 4 steps in the processing of a sample in a lab on chip. And the first step is the introduction of sample. Second is the preparation of sample. Third is the testing of sample. And the fourth step is the detection of signals. If the sample is not properly introduced, we cannot process the sample properly. यानी कि sample की introduction बहुत important है. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप किसी diagnostic laboratory में जाकर अपना sample देते हैं, if your blood sample is not taken properly, then it would be difficult to analyze your sample. You can see in this slide that the lab on chip is actually equivalent to a main or a full-fledged lab. So all the processes which are done in a full-fledged lab are being conducted or carried out in a lab on chip. And the sample collection or sample application is the first step in the processing of a sample. Now, there are 2 types of methods by which we can introduce the sample onto a lab on chip. The first method is a passive method for sample introduction. Passive method वो methods होते हैं जिनमें हम कोई extra cellular या extra force नहीं लगा सकते. यानी कि the force which is present, it should be within the system. And the sample application could be improved by using hydrophobic internal surfaces. And this hydrophobic internal surface allowed the non-absorption and fast mobility of the sample. हमें ये याद रखना चाहिए कि in a lab on chip we have very small channels and the amount of sample is in few microliters. And if we use certain forces that could help to enter the sample into the microchannel, that would be good for the performance of the lab on chip. पैसिव फोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है. इसके अलावा डिफ्यूजन फोर्स का भी सैंपल इंट्रोडक्शन में बहुत अहम रोल है. अच्छा, अब पैसिव मेथड के अलावा द सेकंड मेथड इज द एक्टिव मेथड फॉर सैंपल इंट्रोडक्शन. एक्टिव मेथड में हम मुख्तलिफ किस्म की एक्सटर्नल फोर्सेस यूज कर सकते हैं. एंड दीज फोर्सेस कुड बी यूज थ्रू माइक्रो डिवाइसेस. 2 तरह की माइक्रो डिवाइसेस इस्तेमाल हो सकती हैं. वन इज द माइक्रो वाल्व एंड द अदर इज द प्रेशर पंप. माइक्रो वाल्व और प्रेशर पंप डिफरेंट किस्म की फोर्सेस को यूज करते हैं. इन फोर्सेस में इलेक्ट्रिकल यानी करंट, चेंज इन प्रेशर, हम करंट में तब्दीली ला सकते हैं, प्रेशर में तब्दीली ला सकते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ में तब्दीली ला सकते हैं या मैस में तब्दीली ला सकते हैं. ऑल दीज चेंजेस कुड हेल्प टू इंट्रोड्यूस द sample in the lab on chip. अच्छा, अब एक्टिव मेथड में हम देखेंगे कि इन माइक्रो डिवाइसेस के क्या फंक्शन हैं. पहला माइक्रो डिवाइस मैंने आपको बताया माइक्रो पंप और दूसरा डिवाइस मैंने आपको बताया माइक्रो वाल्व. माइक्रो डिवाइसेस जो हैं सैंपल इंट्रोडक्शन के अलावा सैंपल एप्लीकेशन, एडिशन ऑफ बफर, रिएजेंट फ्लो, मिक्सिंग और डिलीवरी में भी हेल्प करती हैं. इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है जिसको एडजस्ट किया जाता है. एक्टिव सैंपल इंट्रोडक्शन को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं? एक्टिव सैंपल इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल दैट इज सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग है. And this coating is used on the micro channels. जब इस कोटिंग को माइक्रो चैनल्स पर यूज किया जाता है, उसके नतीजे में रिएजेंट फ्लो या रिएजेंट इंट्रोडक्शन, सैंपल फ्लो और इसके अलावा रिएजेंट के मुतालिक भी हम ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन बेहतर हो सकता है. आम तौर पे जो सैंपल लैब ऑन चिप या डायग्नोस्टिक में इस्तेमाल किया जाता है दैट इज ब्लड. ये बायो एडहेजन यानी कि सैंपल्स की माइक्रो चैनल्स के साथ स्टिकिंग को कम करता है. ब्लड का क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज करता है और एनालाइट को प्रिवेंट करता है. अच्छा, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि सुपर हाइड्रोफोबिक मटेरियल की कोटिंग से आखिर हमें किस तरह फ़ायदा हासिल हो सकता है. यू कैन सी इन दिस स्लाइड, अगर
the surface is hydrophilic, what will happen? The contact angle between the drop is less than 30 or less than 30. And it means it is sticking to the surface. In case of hydrophobic surface, the contact angle is equal or less than 120 degree. While in case of superhydrophobic surface, the contact angle is 150 degree. आप इससे इमेजिन कर लें कि हमारा जो ड्रॉप है it retained its shape and it can move easily in the micro channels. अच्छा, examples of micro devices. हमारे पास इन माइक्रो डिवाइसेस को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लैब ऑन चिप्स बनाई गई हैं. इसमें हम एक सिंगल बटन का इस्तेमाल करके इन लैब ऑन चिप डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड वी कैन यूज जस्ट अ फिंगर पुश एंड वी कैन रन दी सिस्टम. इस सिस्टम के लिए मटेरियल is the PDMS. This is the favorite material for the lab on chip technology. Basically, it controls the flow and direction of the pumps and valves. You can see in this slide there is a pump and there is a switching valve, and this could be controlled by a single button with the help of a finger. So in summary, we know that the introduction of sample is the first step in the processing of a sample in an lab on chip. And there are two methods for introducing sample. One is active method and the other is passive method. Active methods, they do not need any external energy, but in case of passive methods, we have to use micro devices such as micro valves and micro pumps. We can also use super hydrophobic material for coating the micro channels, and this coating helps the movement or the introduction of the sample into the lab on chip.